Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE classes. Today we are going to learn standard 10th chapter triangle. In triangle today we are going to learn very important question. This question was asked in CBSE board exam 2002, 2012 and 2016. So it is very important question for your upcoming board exam. So let's see the question. So what is the question? So question is that ABC is a right angle triangle, right angle at A. A circle is inscribed in it. The length of the two sides containing the right angle are 6 cm and 8 cm. Find the radius of this circle. Find the radius of this circle. So here we have to find radius of this circle. So what we have given? So we have given triangle ABC. Triangle ABC is a right angle triangle, right angle at angle A. So angle A is a right angle, and we have given the length of two sides. Right angle are 6 cm and 8 cm. So let's see. Suppose AB is a 6 cm. Not suppose, it is already given. So AB is a 6 cm and AC is a 8 cm. AC is a 8 cm. As we know that ABC is a right angle triangle, right angle at A. Therefore, BC is a hypotenuse. BC is a hypotenuse. So by applying Pythagoras theorem, so हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके BC को हम ढूंढ सकते हैं. सो पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सो BC square is equal to AB square plus AC square, right? Now what is AB? So AB is a 6 cm, therefore 6 square plus what is AC? So AC is a 8 cm, so 8 square, then 36 plus 64, so is equal to 100. BC square is equal to 100. So square root of 100 is 10. So therefore BC square is equal to 10 square. So square cut. So therefore BC is equal to 10 centimeter. BC is equal to 10 centimeter. So now we have the length of AC is 8 centimeter, AB is 6 centimeter and BC is 10 centimeter. नाउ हमको बच्चों यहाँ पे ढूंढना क्या है? हमको यहाँ पे ढूंढना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस ऑफ द सर्कल. सो हियर आप देखते हो बच्चों यहाँ पे तीन ट्राइंगल बन रहे हैं. लेट्स सी. ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOC. सो ट्राइंगल ABC के अंदर आप बच्चों देखोगे तो तीन ट्राइंगल बन रहे हैं और हमको यहाँ पे ढूंढना है रेडियस ऑफ द सर्कल. सो एज वी नो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. So what is the area of triangle ABC? So area of triangle ABC is nothing but it is the sum of the area of triangle AOB plus area of triangle BOC plus area of triangle AOC. Area of triangle AOC. So we can write area triangle ABC. Area triangle ABC is equal to area triangle AOB, area triangle AOB plus area triangle BOC, area triangle BOC plus area triangle AOC, area triangle AOC. So area triangle AOC. Now what is area triangle ABC?
So area triangle ABC is equal to, as we know, the formula to find the area of the triangle is 1 upon half into base into height. So here base is AB and height is AC. So we can use AB and AC as a base and height respectively. So area triangle ABC is equal to 1 upon half into base. Base means AB. AB into AC. So is equal to सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे टू फाइंड द एरिया ट्राइंगल AOB, एरिया ट्राइंगल BOC एंड एरिया ट्राइंगल AOC. सो फॉर एरिया ट्राइंगल AOB, देखो बच्चों क्या दिया है, एरिया ट्राइंगल AOB. सो सेम फॉर्मूला 1 अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. So for area triangle AOB, so base is AB, which is already given 6 centimeter, and ये जो है बच्चों आपका R रेडियस, ये हमारी हाइट हो जाएगी फॉर ट्राइंगल AOB. सो R मीन्स के रेडियस ऑफ दिस सर्कल, जो सर्कल अंदर बन रहा है उसका जो रेडियस है, दैट इज द हाइट फॉर द ट्राइंगल AOB. सो देयरफॉर 1 upon half into AB into R plus area triangle BOC. Now area triangle BOC. So BC is a base and this is height. So what is this? This is radius. So यहाँ पे भी बच्चों हम रेडियस को हाइट लेंगे फॉर द ट्राइंगल BOC, एंड बेस लेंगे बच्चों हम BC. So BC, so 1 upon half into base means BC into R plus 1 upon half into, now for area triangle AOC, इसको बच्चों हमने व्हाइट में लिखा है, एरिया ट्राइंगल AOC. So AC is a base and same radius is a height for area triangle AOC. So बेस हम बच्चों लेंगे AC और हाइट लेंगे हम R. So 1 upon half into AC into R. Now so 1 upon half into what is AB? So AB is a 6 centimeter and what is AC? AC is a 8 centimeter. So 6 into 8 is equal to 1 upon half into what is AB? So AB is a 6 centimeter. So AB is a 6 centimeter into R plus 1 upon half into BC. So what is BC? So BC is 10 centimeter, जो हमने ढूंढा हुआ है by applying Pythagoras theorem. So BC is a 10 centimeter. So 10 into R plus 1 upon half into AC. So what is AC? AC is a 8 centimeter. So AC is a 8 centimeter into R. Now 6 8 जा 48. 1 upon 2 को हम वैसे ही रहने देते बच्चों, क्योंकि यहाँ पे भी आपका कॉमन 1 upon 2 निकलेगा जो आपका कट हो जाएगा. So therefore 1 upon half into So therefore 1 upon half into 6 8 ja 48. 48 is equal to 1 upon half into 6r plus 1 upon half into 1 upon half into 10r plus 1 upon half into 8r. Now 1 upon half common ले लेते, so we take 1 upon half common. So therefore 1 upon half into 48 is equal to 1 upon half into bracket 6r plus 10r plus 8r. Now 1 upon half is cut.
So therefore 48 is equal to 10r plus 8r 18r 18r plus 6r is equal to 24r, right? Now 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड. सो देयरफॉर r is equal to 48 upon 24, so is equal to 2. सो हमारा रेडियस क्या है बच्चों? 2. सो रेडियस, दिस इज आंसर. सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर. सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. सो बच्चों आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा स्टैंडर्ड 10 चैप्टर ट्राइंगल. सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट. इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए. इफ़ यू आर न्यू ऑन टू माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब अपोलो सीबीएसई क्लासेस. सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस और अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. थैंक यू वेरी मच.